Passenger safety is once again under serious scrutiny as concerns grow over the condition of both government and private buses operating in Odisha and neighboring states. This follows two alarming incidents. On October 24th, 20 passengers were burnt alive in a private bus tragedy in Kurnool, Andhra Pradesh. Then on November 6th, an OSRTC bus caught fire near Salur in Manyam district. Thankfully, all passengers escaped unhurt as the incident occurred early in the morning. But these back-to-back incidents have reignited debate over passenger safety and maintenance standards. At the Jaipur bus terminal, both government and private buses reportedly lack basic safety equipment like fire extinguishers and first aid kits. Government buses, including newly introduced ones, are said to be poorly maintained. Passengers allege that even when safety gear is present, it's often neglected by staff. Shockingly, several buses are allegedly running without valid fitness certificates. नॉन एसी बस माने टिके सेटा पुरना जैसी सेटा टिके भल से मेंटेनेंस करू नांते किट्टा बस रे मु देखि थाउची फायर एक्सटिंग्विशर फर्स्ट एड किट नै देखि नन. Private buses fare no better. At Jaipur's private stand, many vehicles reportedly operate without mandatory safety provisions. Despite clear violations, enforcement appears weak, with the district transport department accused of inaction. ए जिनस प्रशासन स्ट्रिक्ट होगा कथा. प्रशासन कर्म करके कर्तव्य पालन करवा कथा. कौन होजाणी कि फिटनेस पाँच जना पड़ना. आमे भी शुणा पाचु केतरा गाड़ी भी बस फिटनेस न था से गाड़ी चल दौरान यहाँ को भी आम दृढ़ निंदा करुचु. आतेरा गाड़ी परमिट न था से भी चलाऊँ जो द्वारा कि नहीं बस यात्री मैंने हंतसंत होती जो कि से इंश्योरेंस पाइबाटा विलंब हम. डिटेल रे हमारे इंक्वायरी हम तदंत हम और जो भी प्रॉब्लम अच्छी माने जमते किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम थी हमारे मैनुअल प्रॉब्लम हम सही हिसाब रे आगे हमें कार्यानुष्ठान ये हमें और थे चेक कर देबा. किंतु आज जो अघटन होता से बस पाखरे फायर सिलेंडर भी थिला से चेष्टा भी करी थिले किंतु रोकी नहीं पारे.